Operating Leverage, Financial Management Module 223. We have talked about the concept of leverage, and we have discussed that leverage is actually the use of fixed cost which results into enhancement of return or profit. So that is how leverage is defined. हमने leverage को capital structure theories की discussion में भी देखा, हमने leverage की basic discussion इससे पहले भी की. यहाँ पर भी हम इसकी discussion को आगे लेके चलेंगे और ये देखेंगे कि leverage कितनी तरह का होता है, इसको कैसे measure किया जाता है, leverage की वजह से risk के अंदर क्या तब्दीली आती है. But the first thing to remember is that leverage is the fixed cost which we have in our system either as the operating cost or as the financial cost. As a result, this affects our profit. It enhances our profit or return. Now, that part of the fixed cost which is related to operations, यानी हमारी कॉस्ट दो तरह की है, एक फाइनेंशियल कॉस्ट है और एक वो कॉस्ट है जो हम प्रोडक्ट को बनाने और उसे बेचने और उसे एडमिनिस्टर करने के लिए खर्च करते हैं. सो दिस पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग कॉस्ट. द ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स नंबर 1 the cost of goods sold, the cost of sales, that is the direct cost incurred on the production of the product. And the second cost, which is part of our operating expenses, is what is called SG&A, that is selling, general and administrative expenses. So operating cost includes these two items, but it does not include that component which creates the financial leverage, and that is called financial cost. यानी operating cost में financial cost शामिल नहीं होती. Now, this is something, this operating cost is something which creates a leverage which is called operating leverage. क्योंकि ये operating cost है और एक leverage create करती है, इसी reference से हम इसे operating leverage का नाम देते थे. So the basic definition is the use of fixed operating cost to enhance the profit is called operating leverage. Now let's see how does operating leverage actually work. When we have a certain component of fixed cost in our operating cost and we increase the production, as a result the fixed cost remains constant and the variable cost increases in proportion to sales. तो cost का एक component जब constant रहता है तो overall cost के अंदर जो इजाफा होता है वो sales या revenue का proportional नहीं होता बल्कि उससे कम होता है. So at higher levels of sales or revenue we find that the profit is even much higher, यानी वो proportionally नहीं बढ़ता बल्कि उस proportional increase से ज़्यादा increase हमें profit में नज़र आती है. And the reason is that the fixed cost does not increase with the increase in the level of sales or production. So fixed cost is a period cost. ये बात हम discuss कर चुके हैं कि अगर एक महीने का किराया या रेंट ऑफ बिल्डिंग पे किया जा रहा है तो उस रेंट ऑफ बिल्डिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा कि हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं या 200 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं. सो फॉर 100 यूनिट्स प्रोडक्शन दिस रेंट विल बी द सेम एज दैट ऑफ 200 यूनिट्स. द सेकेंड थिंग इज व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज दिस पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. If 100 rupees fixed cost is applied to 100 units, this comes out to be 1 rupee per unit. But if 100 rupees fixed cost is divided by 200 units, it comes out to be 50 paisas or half a rupee. अगर हम इसको और बढ़ा दें
अगर हम अपनी प्रोडक्शन को 200 से बढ़ा के 1000 पे ले जाएं तो 100 फिक्स कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में सिर्फ 0.1 के बराबर रह जाएगी. सो दिस मीन्स दैट the additional units that we produce absorb lesser and lesser fixed cost, and as a result the total amount of profit increases. So the final thing that we say that operating leverage is something that is dependent on the component of fixed cost in the total operating cost. यानी हमारी अगर total operating cost को हम 100% suppose करें और उसके अंदर 60% वेरिएबल कॉस्ट हो और 40% फिक्स कॉस्ट हो तो इससे एक लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्रिएट हो जाएगा. लेकिन अगर हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा दें और उसको 70% कर दें और वेरिएबल कॉस्ट 30% रह जाए तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज इससे बढ़ जाएगा. फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह फिक्स्ड कॉस्ट है. यानी अगर किसी ऑपरेशंस के अंदर किसी प्रोडक्शन सेल्स के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद नहीं होगा तो वहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज क्रिएट ही नहीं होगा. अगर थोड़ा फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट होगा तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा. एंड एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग the fixed cost component, the operating leverage keeps on increasing.